देखिए सोनू क्या हो गया इसमें। Okay, so we are live now and I am beginning. ये जो 10 दिन का पीरियड होता है, ये मुझे लगता है किसी भी कैंसर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। हमारे अंदर बहुत सारी एंजाइटी, बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत सारे डर होते हैं। अब क्या होगा, आगे क्या होगा, कौन सा डॉक्टर अच्छा होगा, किसके पास जाऊं, ये क्यूरेबल है भी या नहीं, कौन सा हॉस्पिटल मेरे केस के लिए बेटर होगा। कि हम इस बारे में करने लगते हैं, उसे हम उनके एक्सपीरियंस करते हैं। हम इंटरनेट में अपना रिपोर्ट की ढूंढने लगते हैं, अपना प्रोग्नोसिस ढूंढने लगते हैं कि हमारे कैंसर टाइप में कितना परसेंटेज चांसेस है सर्वाइवल का। What should I do? What should I not do? Over to you, Saima. Yeah, so beginning with few lines of mine. प्रश्नों के चक्रव्यूह से हमको बंधन मुक्त होना है। इस कैंसर से जुड़ जाने की पीड़ा को हौसलों से संजोना है। जब कांधे पर रखा हाथ कानों में हिम्मत फुसफुसाएगा, तो डर कैसा भी हो, यकीन मानो कागजी हो जाएगा, कागजी हो जाएगा। Welcoming you in the second episode of Ashaएं, which is about first 10 days after cancer diagnosis. मैं साइमा परवेज आशाओं के दूसरे एपिसोड में तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हम सभी कुर्सी की पेटी जरा डट के बांध ले, क्योंकि हमारी गगनचुंबी आशाओं की फ्लाइट उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार है। तो शुरुआत करती हूँ आभार से। I would like to express immense gratitude to esteemed panelists, our special invitee, and our distinct audience for joining hands to address an issue of pivotal importance. This initiative is exclusively for the cancer patients, caregivers, as we all know how tough the journey becomes once big C is attached to one's life. और जैसा मैं हर बार कहती हूँ, आशाएं वही हाथ है जो इस मुश्किल समय में हमेशा आपके साथ है। So here we are to join hands with all the cancer patients to help make this journey as easy as possible. We are lucky as me and you Can Care and Grameen Sneh Foundation have joined hands to have these episodes of Ashaएं every month for all of you to help get answers of all the questions which often haunt you, trouble you, जो आपको परेशान करते हैं। Ashaएं is a cancer support group working towards empowerment of cancer patients, empowering them with knowledge, willpower, and positivity. Moving on, remembering some beautiful lines. अगर जुनून हो सिर पर तेरे, तो अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहाँ तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है, तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पर अपने खड़े रहो, अड़े रहो। So moving on to हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, तो आंधियों में साथ मिलकर दिए हमें जलाने हैं, आशाओं की आशा के गीत नए गुनगुनाने हैं। Together we will, we can. So शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। Our session is divided into two segments. First, we have बातें अनकही जो हैं जरूरी, in which our panelists will address the gathering और आप सभी के प्रश्नों का जवाब देंगे। And second segment is hearing and felicitating our cancer warrior, जो हमें याद दिलाते हैं कि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, जो आज हम सब आपको अपनी कहानी से प्रेरित करेंगे और हमारे अंदर हौसले की शक्ति भरेंगे। इस योद्धा की कहानी इनकी ही जुबानी सुनने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिए। This episode is particularly dedicated about first 10 days after cancer diagnosis.
जिस दिन हमें पता चलता है हमें कैंसर है, तो आंसुओं का सैलाब हमारे पूरे घर को घेर लेता है। ऐसा लगता है अब सब खत्म। फिर इस कैंसर से जंग लड़ने की तैयारी शुरू होती है। आज हम सभी कैंसर की डायग्नोसिस के पहले 10 दिन उठने वाले हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। उन हर सवालों पर विराम लगाने की कोशिश करेंगे। कैंसर डायग्नोसिस के बाद क्या करना चाहिए, एंजाइटी स्ट्रेस को कैसे अपने से दूर रखना चाहिए, कीमो क्या है, रेडिएशन क्या है, व्हाट इज टारगेट थेरेपी। आपके दिल में उठते ऐसे सभी सवालों पर विराम लगाने की आज हमारी मंशा है। We have eminent panelists to address all these questions related to cancer care. We are lucky to have with us Dr. Nimesh G. Desai, Senior Consultant in Psychiatry and former Director IHBAS Delhi, a renowned psychiatrist and public health professional, one of the best names in the field of psychiatry in the country. He will help us guide how to deal with the mental stress which comes along with cancer diagnosis. We also have renowned oncologist Professor Dr. Meenu Walia, who will chart a map of what one should do and what not in the first 10 days after cancer diagnosis. हमें एक रोड मैप मिल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं जिस दिन हमारे साथ कैंसर जुड़ जाता है. So let us all encapsulate our mind, body, and soul with the knowledge of our panelists and bust all the myths and clear the air. So, beginning with the session, it gives me immense pride to introduce first panelist of this evening, oncologist who is one of her kind in her domain and institution in herself, my favorite Dr. Meenu Walia. So, introducing the first panelist, Dr. Meenu Walia is a renowned medical oncologist in the National Capital Region of India. She has been dedicated in serving cancer patients for about 3 decades and continues to do so with full conviction. Currently, she superheads the Department of Medical Oncology and Hematology at Max Super Specialty Hospital. She is actively involved in clinical cancer research at global level and is the principal investigator for various global oncology research. She has been decorated with various awards. The list is very long. She is a founder member and actively involved in development of support groups for cancer patients. We welcome Dr. Meenu Walia and are full of gratitude for taking up a cause which needs voice support, which she always gives us. Second panelist of the evening, Dr. Nimesh G. Desai, Senior Consultant in Psychiatry and former Director IHBAS Delhi, a renowned psychiatrist and public health professional. Dr. Desai has been the head of psychiatric department at National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore, and has also served at Delhi Top Medical Institute, AIIMS, for a decade. Dr. Desai is the former director of Institute of Human Behavior and Allied Sciences, where he served for 23 years, taking up the responsibility of developing it as a national institute and a center of excellence. He was the past Honorary Secretary General of India Psychiatric Society. He is known for his outstanding work in treating and addressing mental illness, breaking taboos, social stigma around it, which is very necessary when we talk about cancer. So let us begin with the first segment of the episode, Baatein Unkahi Jo Hai Zaruri. So Dr. Meenu, is Dr. Desai here with us? Okay, so let me begin with questions which are there for Dr. Meenu Walia. So ma'am, the first 5 things, पहली 5 चीजें वो क्या होनी चाहिए जब आपको कैंसर डायग्नोस हो जाता है, जब आपको पता लग जाता है आपको कैंसर है, तो उसके बाद वो पहली 5 चीजें जो बेहद जरूरी है करनी once the cancer has been diagnosed. Thank you, Saima. First of all, for a very warm introduction. And मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? Yes, ma'am, perfectly. और दूसरा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो हम डे इन एंड डे आउट बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स मिलते हैं जिनके एक इम्पोर्टेंट सवाल को तुमने एड्रेस करा है. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस मतलब आपको ये बताया गया है, एक डायग्नोसिस बताया गया है. हमारे दिमाग में एक बहुत लंबी सी जंग चलती रहती है और कई लोगों को शायद एक्सेप्टेंस काफी देर तक नहीं आती. कोई मतलब टेक अ पॉज, रुकिए. यस, ये अगर हुआ है तो सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए, अपने आप को संतुलित करिए
अपने परिवार को संतुलित करिए और just accept the diagnosis and prepare yourself कि आगे यस मुश्किल है, कठिनाई है, बहुत बड़ी चीजें हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि ये कठिनाई दूर नहीं हो सकती, ये मुश्किलें हल नहीं हो सकती। और इसमें जो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ, कट द क्लटर। द मिनट somebody is diagnosed with cancer, जो एक फर्स्ट स्टेप होता है, जैसे अभी आपने नित्या को भी सुना, एकदम से आप जिससे भी आप बात करेंगे, एवरीबडी, चाहे वो आपके घर में झाड़ू लगाने वाली आपकी बाई होएगी, या घर में काम करने वाला कोई आएगा, या धोबी होएगा, या फ्रॉम दिस टू द XYZ, एवरीबडी यू कम इन कॉन्टैक्ट विद, जिनको बताया जाएगा कि आपको कैंसर है, हर आदमी आपको एक एडवाइस देने को रेडी होता है। सबसे बड़ी एक पहली टेंडेंसी होती है आज की यंग जनरेशन की कि सीधा बैठ के एवरीबडी स्टार्ट्स गूगलिंग, तो गूगल बाबा के पास हम सब पहुंच जाते हैं, एंड वी स्टार्ट पुटिंग इनटू द एंड स्टार्ट सीइंग व्हाट इट इज। What we also have to understand, a lot of information that goes around is not that every information जो इस तरह की गूगल पे, there is no way to check what is authenticated information and what is not, and everybody will come with all sort of advices, and इसको एक मेडिकल लैंग्वेज में हम टर्म यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन फैटिग सिंड्रोम। आपके ऊपर इतनी बम्बार्डमेंट हो रही है, ये करो, ये नहीं करो, ये खाओ, ये नहीं खाओ, इधर जाओ, इस डॉक्टर को दिखाओ, उस वैद्य को दिखाओ, इस होम्योपैथ को दिखाओ, ये करो, कि यू विल एक्चुअली गो मैड। सो सबसे पहले accept the diagnosis, cut this clutter, just cut away from this clutter, लंबी सांस लीजिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए, अपनी फैमिली के साथ बैठिए, राइट डाउन योर क्वेश्चंस, व्हाट आर योर क्वेश्चंस, दिमाग में क्या सवाल है, क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं, आस्क द राइट क्वेश्चंस, and last but not the select your hospital and your doctor, and last but not the least, what is very very important is start treatment as timely as possible। मेरे अपने क्लिनिकल करियर में हम कितनी बार देखते हैं कि डायग्नोसिस बन गया, सब कुछ बन गया, यू हैव टोल्ड द पेशेंट ऑल्सो, बट उसके बाद एक्सेप्टेंस बिकम सो डिफिकल्ट, देन डायग्नोसिस बनने के बाद भी हम कई बार इतना सोचते हैं या फिर हम इतना बह जाते हैं एक इंफॉर्मेशन फैटिग सिंड्रोम में कि शायद जब तक ये गाड़ी शुरू होती है तब तक कई बार बहुत लेट हो जाती है। These are 5 important things that everybody needs to do. Sure, मैम, डेफिनेटली। जैसे आपने अभी बोला, मेरी लैंग्वेज में इन कम्युनिकेशन हम इसे डिसइंफॉर्मेशन भी कहते हैं, हम इसे मिस इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं, which is we are being bombarded within today's time when everything is digitalized. So taking your answer forward, I would like to ask Dr. Desai. Sir, you are there? Yes, I am here. I'm sorry. Okay. Namaskar, namaskar, sabko. Namaskar, sir. Namaskar, sir. Minu ji, I'm so sorry. I just got a bit delayed. Yes, but I was listening to Dr. Minu Walia abhi, and that was superb. Yes, sir. So, ma'am का ही question I would like to take forward, and I want to ask you कि कैसे, how do I create that acceptance in my mind, and how do I create that acceptance with positivity कि हाँ ठीक है, कैंसर हुआ है, कैंसर ही हुआ है, इसके आगे बढ़ना है, जिंदगी इसके बाद भी है। How do I create that positivity in me? सबसे पहले, continuing from what I heard Dr. Minu say, I suppose it's been covered, but if I'm repeating, please forgive me. ये जो हवा है इसको कम करें, कैंसर के नाम का हवा जो है उसको पहले तो कम करें। You know that extreme emotional reaction really needs to be contained. Like she said, and I'm completely in agreement with everything that she said, just to refine that a little more or put it in different words, some don'ts, जो चीजें ना करें तो अच्छा होगा, procrastination in treatment, window shopping, too much of science information, especially Google based or any such. Those are the don'ts. The positive, I'm again totally with her. Cut the clutter, acceptance, preparedness, and मुझे बड़ा याद आता है, मीनू जी, I hope you agree, we haven't discussed this issue too much, but really seek support from others who have been through that. Dr. Minu, and we just met once in one meeting recently, but what I'm thrilled about amongst many such efforts is
this effort that you are making from your individual self and the team to bring people together who are going through or who have been through similar difficulties. One, if there are cancer survivors. Second, even if beyond survivors, there are family members who have survived, because with correct scientific information from the healthcare professions and doctors, equally helpful information, support, and direction can come mainly from the others who have been through similar problems. Nothing can be better than that combination. Correct information seeking and action from based on what the doctors advise and what the others can tell you. Don't be averse to accepting even the psychological reactions. There can be. We are all human. Anxiety, depression, or agitation, or any of those symptoms, or even if there is a syndrome of depression or anxiety, let that be handled properly by the oncology and the mental health team together. I'm sure Minuji will agree that there is so much of a need for active collaboration between the oncology and the mental health team in any setting. We can continue from there. Sure, sir. If I So can interrupt, Saima, Dr. Yes, ma'am. Desai, आपको याद होएगा हम जब एक कॉन्फ्रेंस में अभी हाँ जी। पीछे मिले थे, हाँ जी। तो आई एम स्टिल इम्प्रेस्ड विद योर वर्ड्स व्हिच यू सेड कि कोविड ने हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिखा चीज दिया है। सिखाई है। Right. कोविड ने हमें सबसे पहला तो ये दिखाया कि एविडेंस, Science. क्लिनिकल एविडेंस, साइंस इज इम्पोर्टेंट, एंड कोविड ने हमें ये भी सिखाया कि प्रिवेंशन इज इम्पोर्टेंट, वैक्सीनेशन इज इम्पोर्टेंट। कोविड ने हमें सिखाया कि हेल्दी लाइफस्टाइल इज इम्पोर्टेंट, और कोविड ने हमें ये सिखाया कि ये सब जो है ये सब यहीं का धरा रह जाएगा। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। सो दीज वर एक्चुअली डॉक्टर देसाई's words and they have stayed with me. और वो जो सेंस ऑफ डिटैचमेंट है ना, विरक्ति की भावना थोड़ी सी, आई एम श्योर यू एग्री दैट कैंसर डायग्नोसिस इन डिफरेंट एज ग्रुप्स कैन अफेक्ट डिफरेंटली साइकोलॉजिकली। आज मौका दो, बात करेंगे, आगे करेंगे। ऑब्वियसली द पर्सन कंसर्न एंड द फैमिली रिक्वायरिंग सपोर्ट विल बी डिफरेंट, चिल्ड्रन एंड यंग एडोलेसेंट्स, एडल्ट्स, middle-aged persons, elderly. But that having been said, एक डिटैचमेंट की भावना विथ हेल्दी वर्ब फॉर लाइफ, वो होना पड़ेगा। लेकिन अच्छा हुआ आपने वो याद दिलाया। मैं बहुत जगह वो कह चुका हूँ, जो 4-5 मुद्दे हैं, और वो ऑन्कोलॉजी में उतना ही लागू होता है। सबसे बड़ी बात, इफ आई माइट कंटिन्यू फ्रॉम देयर, एंड इन ऑन्कोलॉजी दैट्स ट्रू मोर देन इट इज फॉर मेंटल हेल्थ। पिछले 10, 20, 30, 40 साल में इतनी प्रोग्रेस हुई है कि अगर हमने या किसी भी एक आम नागरिक ने अपनी धारणा बनाई हुई कैंसर के बारे में बेस्ड ऑन व्हाट वी सॉ और हर्ड इन चाइल्डहुड और यंग एज, वी मस्ट टॉक टू द बेस्ट एविडेंस पॉसिबल एंड गेट बेस्ट हेल्प. One of the sins or crimes, I think, is for the healthcare team not to deliver or for the family not to avail of the best available scientific methods. हर 5 साल में साइंस इतना एडवांस हो जाता है। आप लोग ऑन्कोलॉजी में तो इतना बढ़िया आगे कर दिए हो, है ना? तो उसका, और ये अक्सर नहीं होता है हमारे देश में शायद, है ना? वो पुराने विचार सोच के वो निराशा की जो भावना है वो बैठ जाती है। एंड दिस आई मस्ट से, जो आप कह रही थी, आई एम श्योर हमारे साथी इसको जरा गौर करेंगे आगे भी और आज भी। वेरी ऑफन द साइकोलॉजिकल रिएक्शन लीड्स टू इनर्शिया, and the worst thing to do with a diagnosis of any oncology nature is inertia. What the person concerned needs to do, what the family members need to help, and the health team needs to make sure is whatever diagnosis there is, as of today 2022 में कौन सा best options available है? Can I do that and live a quality of life for X number of years? तो वो इतना बदलता रहता है साइंस, और वो बेनिफिट ना पहुंचे। अगेन दोनों जगह है, ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में अलग अलग कारणों से लागू होता है। द सोशल इश्यू इज दैट सेंस ऑफ डिफीटिज्म और इनर्शिया, वो ना हो। वेरी ट्रू सर, सो ट्रू कि इनर्शिया नहीं होना चाहिए। And I so feel that yes, we are progressing drastically in science. We are all moving forward.
एंड आई एम श्योर कि ये जो कैंसर का जो स्टिग्मा है ये धीरे धीरे डाइल्यूट होगा और निराशा की जगह आशा जुड़ेगी कैंसर के साथ, एंड कैंसर डायग्नोसिस जैसे ही होगा तो हमारा चेहरा नहीं लटकेगा, rather we will be hopeful. So yeah, that is very this I'm sure this is about to happen, and that is what we are doing here. आशा इसीलिए है to detach nirasha and attach asha with asha. I know, also I love the title, Minuji. Yeah. I'm very impressed with the title and the effort, truly. Yeah. I think somebody wanted to raise something. Yeah, I wanted to ask something from Dr. Meenu. Ma'am, I wanted to ask you कि जैसे for example कैंसर हो गया, कैंसर डायग्नोसिस हो गया, तो should I go to a standalone hospital जहाँ का oncologist बहुत famous है, or should I head towards a multi-speciality hospital, or should I head towards a super speciality hospital? What should I do? I think ये बहुत ही complicated question है और इसका एक straight answer नहीं हो सकता. सबसे पहले what is important is कि we have to go to the hospital and we have to go to a good hospital with a good doctor and a good backup team. That is very, very important. And जैसे डॉक्टर देसाई ने बोला ना, the wearer knows that the shoe pinches. तो अगर ये जो पूरा आशाएं का ग्रुप बना है वो इसीलिए बना है for what we say, West में क्या है? West में there is a very strong support system. People are educated. People know what to filter, what not to filter. कि अगर वो गूगल में आ रहा है तो उसमें क्या रिकॉग्नाइज साइट्स हैं, क्या बेटर है, क्या फिल्टर करना है, क्या नहीं करना है. And they themselves have support groups. There are a lot of support groups, breast support group, ये support group, वो support group. And in support group में people interact with each other. The patients interact with each other. And they help each other. कि एक जैसे होता है ना, एक ने हाथ बढ़ाया और दूसरे को हेल्प करा कि जब मेरी कीमो हो रही थी, मेरे साथ क्या डिफिकल्टीज हो रही थी, हाउ आई कैन हेल्प यू, एंड दैट मेक्स द मैक्सिमम इम्पैक्ट. So a doctor sitting across the table, across the other end of the table will not make that much impact because yes, patient भी तो मन में ये सोचता है ना, तुम्हें क्या मालूम. It is very difficult, very easy for you to say ना, कोई बात नहीं, कीमो में कुछ नहीं होएगा. But it is not like that. We all understand. Yes, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ चीजें होंगी जो उसे ही झेलनी है. But when it comes from somebody who has gone through that journey, then why it is important? Because then that person accepts कि अगर ये झेल सकता था तो मैं क्यों नहीं. ये भी तो वही हार्ट मास का पुतला है, ये भी उसी चीज से बना है जिससे मैं बना हूं. तो अगर ये इससे बाहर निकल सकता है तो मैं क्यों नहीं. That is something. So if you Sorry, Minuji. If you are a part of a support group, if you have something like this, that gives you maximum guidance. And yes, from a personal aspect, I will say कि वो develop depend करेगा कि आपकी कहाँ से locality है, आपके पास access क्या है. Because I always feel backup is very important. It is not that a cancer patient will require only cancer treatment. One cannot say. हो सकता है उसे diabetes भी होए, उसे heart disease भी होए, उसे अभी नहीं है तो आगे over a period हो सकती है. So one will require a full backup and a full qualified team to handle everything in the future, and that should be our thought process. For a short term, we should not try to cut out, cut corners, because what is always important, and I always say about cancer, that your first attempt is always the best attempt. We should go all out. अगर 3 महीने का कष्ट है, अगर 6 महीने का कष्ट है, तो वो कष्ट सहना चाहिए, because it is worth it. It is worth it because it is going to make a difference. What normally happens in our country is the other way around. People initially will not take it seriously. People will feel कि ये तो कोई भी कर देगा, कहीं भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा. घर के पास मतलब they will try to see social छोटी-छोटी चीजें, logistics. And when it goes out of control, and then they run to a big center, then they run to a better place and a better this thing. But it should be the other way around, because first attempt will give you the chance, maximum chance to be cured. Once it is like becomes complicated, then things are very, very difficult to handle. Can I say? Yeah, please, sir. जो आखिरी मुद्दा डॉक्टर साहब ने कहा वो तो बहुत बहुत उम्दा है ही है. मैं एक नुक्ता उठाना चाह रहा हूँ further to what डॉक्टर साहब said about this support group and carers groups. जैसे मैंने ने कहा, वेस्टर्न कल्चर में ये बहुत सारे हेल्थ इश्यूज में पहले उभर गया, 40-50 साल पहले. हमारे यहाँ अब हो रहा है.
धीरे धीरे और अच्छा हो रहा है बहुत सारी स्पेशलिटीज में। मुझे आई होप मैम यू विल एग्री, आई रियली वुड लाइक योर रिस्पॉन्स टू दिस एंड मे बी इन दिस ओपन ग्रुप। एक जरूरी है, मुझे लगता है, when I reflect back and when I look at what we do with careers groups, वेस्टर्न कल्चर के मुकाबले शायद, माफ करिएगा, हमारे कुछ साथी हमारी ठेठ भाषा, मैं इफेक्टिवनेस के लिए कुछ शब्द ठेठ भाषा के इस्तेमाल करूंगा। हर कल्चर की पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होती है, हमारी कल्चर की भी बहुत पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, लेकिन एक जो नेगेटिव है खासकर ऐसी हेल्थ क्रिटिकल कंडीशंस में, इज चौधरीपना। तो मुझे ये लगता है कि चौधरीपना अवॉइड अगर करना हो तो एक नुस्खा है कि जो कैरियर ग्रुप्स है, सपोर्ट ग्रुप्स हैं, वो प्रोफेशनली सुपरवाइज्ड हो। तो जैसे मुझे इतनी समझ आई है डॉक्टर साहब, और हम अभी भी एक दूसरे को जानने पहचानने में, साथ काम करने में शुरुआत कर रहे हैं, ये जो आशाएं की एफर्ट है और ऐसे जो सारे एफर्ट हैं, because it's also likely that not just because of education but because of or lack of it, but because of the cultural habits, very often half-baked opinions are thrown around even by the other people in the support group, and so there is that need कि सपोर्ट ग्रुप हो, कैरियर्स को एक दूसरे से एक्सचेंज करके सीखने का मौका पूरा दिया जाए, मिले, लेकिन उसमें साथ साथ प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन और सुपरविजन हो, जिससे कहीं अगर राय मिस अप्लाई हो रही है। See, I may have had a lung tumor of one nature. The other person, other family may have lung tumor of a slightly different nature. और वो जो फाइनल एस्पेक्ट्स हैं, वो नुक्ते प्रोफेशनल को भी कोऑर्डिनेट करेगा, स्वरेज करेगा, तभी हो पाएगा। Very rightly said. Very, very, very valid point. So And Indian and day in and day out, we see patients who come with कि हमारे फलाना फलाना का ये हुआ था, so they take it कि अब किसका ये इलाज हुआ था, अब उसका कोई ब्रेस्ट कैंसर था, किसी का कोई और कैंसर है, कौन सी स्टेज का है, within the same cancer, the different types of cancers. So everybody has to understand कि every cancer is different. तो आपका कैंसर, आपकी स्टेज, आपका टाइप ऑफ कैंसर, उसमें कौन से मार्कर्स है, हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, नहीं है, मे बी इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम समबडी एल्स दैट यू नो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गो बाय साइंटिफिक नॉलेज. If I might say again in those matter, एक तो चौधरीपना जरा कम होने दें अपने भले में, और दूसरा हड़बड़ाहट ना करें. One of the worst things that happens is that consternation, either inertia or too much of activity, running around from here to there, helter-skelter, trying to get 10 opinions. I'm totally with Dr. Saab in general in health practice, and certainly oncology ऐसी sensitive specialty में कोई भी व्यक्ति या family carefully choose करे initially या late stage के लिए, but once you've chosen an agency or a health team, please have trust and follow it. You know, it doesn't help to keep running around. True, sir. And ये capping edge supervision of cancer support groups and care groups is extremely important. Yes. Is because you are sharing your reports there. आप अपनी report एक बार float कर रहे हो, and somebody gives you an opinion. This is the end of life, and you have 3 months left. तो आप तो already, आपके लिए तो 1 महीना already खत्म. बट हो सकता है डॉक्टर आपको बोले कि नहीं है तो कुछ भी नहीं है, यू परफेक्टली फाइन. सो जो एक नजरिया होता है डॉक्टर का रिपोर्ट रीड करने में और एक आम आदमी का नजरिया, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट. तो and I really want to ask this question to both of you, and I want to know how should we do it, because आज भी till date I'm an educated person. I took my Masi to a hospital. She does not know she has cancer, and she went for radiotherapy. And she told me, यहाँ मत बैठना, यहाँ पर भाप लग जाएगी क्योंकि कोई कैंसर पेशेंट बैठा है और तुम्हें हो जाएगा. How do we neutralize the stigma? Sir, ma'am, we need to do this together. How do we neutralize the stigma of cancer which is there in our society? What do we do to just get away from it? We tell every time cancer छूत की बीमारी नहीं है, but still अगर भाप से हो रही है और ये लोगों में अभी भी दिमाग में बैठी हुई है, तो हम ऐसा क्या कर दें कि ये चीज खत्म हो जाए, या ऐसी क्या कोशिश हम लोग सब मिलकर करें to just neutralize the stigma related to cancer? Ma'am, sir, whoever would like to answer first. So I guess मैम ज्यादा बता पाएंगी मुझसे. Very rightly said, Saima. I mean, almost I think कल या परसों ही मैंने OPD में एक पेशेंट को देख रही थी, तो उन्होंने, हस्बैंड का यही था कि मैडम हमें कैंसर ने ना बहुत कुछ सिखा दिया.
सबसे पहले तो कैंसर ने मुझे ये बता दिया कि ये छूत की बीमारी है। मैंने कहा क्या कह रहे हो, इट इज नॉट कम्युनिकेबल। कहता नहीं मैम, आपको नहीं मालूम कि क्या है। जब से हमारा डायग्नोसिस हमारी गली में पता लगा है, जो मिलने वाले थे उन्होंने आना छोड़ दिया है। और आपस में एक दूसरे को बोलते हैं कि उनके घर मत जाना, उनको तो घर में कैंसर है। उनके बिस्तर पे करते, उनके कोई मिलने आता भी है गलती से तो जहाँ सोफे पे वो बैठी होती है वहां पे कोई बैठता नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको भी कैंसर लग जाए। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। मतलब मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, जो हमारी कंट्री की कैपिटल है, और एक पढ़ी लिखी सोसाइटी की बात कर रही हूँ, मैं किसी दूर दराज गांव की बात नहीं कर रही हूँ। ये है, ये बहुत ज्यादा है, और इसमें ये हम सब लोगों का ही कर्तव्य है। तो इसमें हम सबका ये एक कर्तव्य है ये लोगों को बताना कि कैंसर छूत की बीमारी नहीं है। अगर कैंसर छूत की बीमारी होती तो सबसे ज्यादा कैंसर उन्हीं लोगों को होता जो नर्सिस और डॉक्टर्स इनके इलाज इस कर रहे हैं। इलाज कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे फिर कैंसर से ग्रस्त होते हैं। तो कैंसर हॉस्पिटल के जो स्टाफ होता वो सबसे पहले कैंसर होता। तो अगर कैंसर छूत की बीमारी होती तो जैसे कोविड में वो आप वो पहन के अपना अस्त्र शस्त्र पहन के, जो वस्त्र पहन के आप घुसते थे, तो कैंसर वार्ड में भी शायद डॉक्टर और नर्सेस सब वही पहन के घूमते। ऐसा क्यों है कि वो सब पहन के नहीं घूमते और आपको हाथ लगाते हैं और आपके साथ बैठते हैं? क्योंकि ये छूत की बीमारी नहीं है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लाइटर वेन में जैसे आपने कहा मैम, ऑन्कोलॉजी के लिए साइकियाट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इनफेमस है ना, कि क्या क्या साइकियाट्रिस्ट में ज्यादा तकलीफ होती है साइकियाट्री की है ना। तो ऑन्कोलॉजी साइकियाट्री में ये जनता में और इवन हमारी मेडिकल कम्युनिटी में बहुत कॉमन बिलीफ है। आई विश यू सेड हाउ मच टाइम डू वी हैव, आई डोंट नो मैम। आई आल्सो थॉट वी शुड टच अपॉन द थिंग ऑफ ब्रेकिंग न्यूज। आई डोंट नो, हैव यू कवर्ड इट और शैल वी? ब्रेकिंग द बैड न्यूज वाला we have not covered the topic of breaking news. हाँ, तो थोड़ा मुझे जो एक दो सूझा है ना, तो मैं इन एडिशन टू जो कॉन्टेजियसनेस वाली डॉक्टर साहब ने बात कही पूरी तरह, एक अगेन डॉक्टर साहब माइट करेक्ट मी, रियली मेरी समझ में 30-40 साल में जो आया है ना साइकियाट्री मेडिसिन इंक्लूडिंग ऑन्कोलॉजी, दैट आई हैव एक्चुअली वर्कड अ लिटिल बिट ऑन मैम, IRCH एम्स में भी, इज ऑन्कोलॉजी, कैंसर, ऑल टर्मिनल इलनेसेस या इवन मानसिक बीमारी जैसी या किडनी वाली, समाज मानता था और मेडिकल साइंस भी 40-50 साल पहले ये मानता था कि व्यक्ति को या उसके परिवार को बताना नहीं है, या धीरे धीरे करके पीस पीस में बताना। मेरी समझ में फॉर्चुनेटली the thought process has become more sensible and rational over the last 20-30 years, कि obviously there is a technique, there is a supportive, sympathetic, empathic way of breaking the news, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे मैंने पहले कहा, एज ग्रुप के मुताबिक जो लाइफ की सिचुएशन है उस इंडेक्स पेशेंट की उसके मुताबिक, बट ये गलतफहमी हम ना करो, मुझे अगेन लगता है हमारे समाज में ये ज्यादा है। वी बिकम टू ओवर प्रोटेक्टिव। So either the one head of the family will not tell the rest of the family, or the family will know, the concerned person doesn't know. सबसे खराब ये होता है कि वो जो concerned person है वो कुसुर पुसुर सुन रहा है, उसे कुछ आधी इंफॉर्मेशन मिल रही है फैमिली के और डॉक्टर नर्सिस के चेहरे से दिख रहा है, लेकिन कोई उससे बात नहीं कर रहा है। To me it has appeared that in all branches of medicine and healthcare including oncology, प्रोसेस थोड़ा और सेंसिबल हो गया है कि सपोर्टिवली करें, मेथड से करें, लेकिन जो सच्चाई है वो फैमिली को और व्यक्ति को अवगत कराएं। देयर इज नो पॉइंट हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन। और वही बात आ जाएगी जो मैंने जब मैं ज्वाइन किया मैडम को कहते हुए सुना, प्रिपेयर्डनेस ऑन ऑल एस्पेक्ट्स, हेल्थ, सोशल, इमोशनल, फाइनेंशियल, जो भी प्रिपेयर्डनेस करनी है वो प्रिपेयर्डनेस तो तब होगी ना, सबसे पहले अगर एक हेल्दी वे में न्यूज शेयर की जाएगी। I really be sure that I am genuinely aware, appreciative of all positive and negatives of all culture, but मुझे ये भी लगता है कि हम लोग इंडिया में और साउथ एशिया में we have a lot of positive aspects we must recognize and build on and retain, but we must also recognize कि हमारी कल्चर की कुछ ऐसी खासियतें जो ऐसी सिचुएशंस में अच्छा इफेक्ट नहीं करती हैं।
यू नो ओवर प्रोटेक्शनिज्म उसमें से एक है, खास अगर वो बच्चा या एडोलेसेंट हो, यंग एज हो। नेचुरली इमोशनली भी पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए इट इज वेरी हार्ट रेंजिंग टू डील विद दैट फैक्ट। भाई यंग चाइल्ड और एडोलेसेंट और यंग एडल्ट, यू नो 12-15 साल का, 8 साल का बच्चा, 22 साल का, 25 साल का गबरू जवान है, उसे कुछ हो गया, यू नो, तो नेचुरली एक तो फैमिली ने अपने इमोशन से डील करना है, साथ साथ ये भी करना है कि उस व्यक्ति को धीरे धीरे सपोर्टिवली अवगत कराया जाए। इट्स नॉट इजी, प्लीज बी श्योर। मैं पूरी संजीदगी से कह रहा हूँ, संवेदनशीलता से, कि ये आसान नहीं है, लेकिन ये करना बेहतर रहता है। मैम, रियली योर व्यूज टू लर्न फ्रॉम यू। So what I feel is कि it has to be in a gradual way, sitting with the family, discussing everything, and then breaking the news. For example, I strongly feel कि आज की डेट में कुछ एजुकेटेड क्लास आती है जो मांगती हैं कि मुझे मेरा डायग्नोसिस बताओ, मुझे बताओ मेरी स्टेज क्या है, मुझे सब आगे प्लानिंग करनी है, आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, आई हैव टू डू एवरीथिंग. So it is very well if somebody is informed, somebody wants to know the information, but many times I also feel sir कि कुछ ऐसे भी आते हैं जिसमें बहुत सिंपल है मदर, आज ही मैंने सुबह देखा था, आई थिंक उन्होंने शायद आज ज्वाइन भी करा है, बहुत सिंपल है, मदर हैं, उनको शायद मालूम भी नहीं, मतलब she has this disease and he has been going through the treatment, but somewhere people and the family feels कि they have been doing so well because they know कि how will they take the news. Possibly शायद news मिलती तो वो बहुत shattered हो जाते या किस तरह से होते. I guess this also requires a psychologist, there has to be a counselor and it should be in a proper manner. Graded, और जो आप सही कह रही हैं, graded approach भी हो और उस इंडिविजुअल की पर्सनालिटी और फैमिली की डिसीजन के मुताबिक. आई एम विथ यू टोटली. एटलीस्ट मैं ये कहूं कि अगर फैमिली और ट्रीटिंग टीम मिलके ये तय करती है कि भाई इस व्यक्ति को हमने इंफॉर्मेशन शेयरिंग डिले करनी है, तो एक कंसीडर्ड डिसीजन हो कि फला कारण है, ये सिचुएशन है, इसलिए हमने इंफॉर्मेशन लेट या करनी है ना. करेक्ट मैं इसमें मैं बहुत राइटली आपके साथ एग्री करती हूँ कि जहाँ पे भी एजुकेटेड लोग होते हैं पेशेंट्स, तो उनको फिर मैं अटेंडेंट से यही बात करती हूँ कि देखो अगर वो पढ़े लिखे हैं, वो इंटेलिजेंट है ना, वो अपनी डिस्चार्ज समरीज पढ़ेंगे, वो अपना एक एक रिपोर्ट पढ़ेंगे, अपना एक एक पेपर पढ़ेंगे. अगर हम उन्हें नहीं बताएंगे देन दे विल फील फैमिली कुछ मुझसे छुपा रही है, तभी तो नहीं बता रहे. There is something serious, that is why we are not telling. And that, as you said, वो थोड़ी जो खुसर उनके कानों में वो बड़े खराब होती है, वो और भी ज्यादा हार्मफुल होती है. Whenever there is a person whom we know कि ये बहुत बैलेंस्ड है, स्ट्रॉन्ग है, उनको स्ट्रॉन्ग करना हमारा काम है, उनको स्ट्रॉन्ग करना आपका और मेरा काम है, अटेंडेंट्स और हम सबका मिलके काम है. और तो हमें उनको एक प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत जरूर देनी चाहिए ताकि वो भी इस जंग में हताश ना हो. बिल्कुल. हमारे चैट में भी हमारे 2-3 साथी यही कह रहे हैं. आई एम ट्राइंग टू फॉलो द चैट अलोंग साइड. they are saying, you know, survivor themselves. है ना. बिल्कुल सर. अवेयरनेस एंड टॉकिंग अबाउट इट आई थिंक इज द सॉल्यूशन. मेरे हिसाब से भी लाइक ऐसा लगता है कि ये यहाँ बैठकर एंड ये बड़ी बड़ी बातें करती है, आशाओं की बातें करती है, बट मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स को कैंसर था एंड आई लॉस्ट बोथ माय पेरेंट्स टू कैंसर, बट माय मॉम फॉट ब्रेवली फॉर 30 odd years टू कैंसर. और उनकी कैंसर डायग्नोसिस मैंने उन्हें बताई थी. शी सैट नेक्स्ट टू मी, आई सेड मम्मी कैंसर हुआ है. शी सेड ठीक है हुआ है, आगे बताओ क्या करना है. I went to Dr. Meenu and Dr. Meenu ने सिर्फ 2 शब्द, मैंने डॉक्टर मीनू से 2 शब्द पूछे. मैंने कहा मैम ठीक हो जाएंगी. उन्होंने बोला क्यों नहीं होंगी. उनका क्यों नहीं होंगी ने मेरी इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ा दी कि I never looked back. I said कैंसर है, थायराइड, डायबिटीज जैसा है, ठीक हो जाएगा. My mom was never scared. So I'm just giving an example कि I can actually empathize. ऐसा नहीं है मैं आशा भरी बातें सिर्फ बैठकर नहीं, बहुत अच्छे. relate to it. So another question जो मैं डॉक्टर मीनू से पूछना चाहती हूँ, मैम हाउ इम्पोर्टेंट इज सेकंड ओपिनियन. एक ओपिनियन हमें मिल गई, मुझे कैंसर है. शुड आई लुक फॉर सेकंड ओपिनियन और शुड आई बी सैटिस्फाइड विद वन ओपिनियन एंड गो अहेड विद द ट्रीटमेंट? So देखो, if you are not satisfied with your first opinion, there is no harm in taking a second opinion.
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि हमारे तो शास्त्र भी ये कहते हैं ना, अगर आप आस्था है तो पत्थर भी भगवान है और चमत्कार होते हैं। अगर आस्था नहीं है, अगर मुझे विश्वास नहीं है, तो भगवान भी सामने आ जाएंगे और हम कहेंगे ये कौन है ना, नारायण भी सामने आ जाए तो हम नहीं पहचानेंगे। सो इट इज समथिंग लाइक दैट कि अगर आपको पहले ओपिनियन से तसल्ली नहीं है तो आप जरूर करिए, बिकॉज जहां मन रुके वहां रुकना चाहिए। बट अगेन आई विल से कि वो फर्स्ट का, सेकंड सेकंड का, थर्ड थर्ड का, फोर्थ फोर्थ का, फिफ्थ, ये हम बहुत कॉमनली देखते हैं। और इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो गाड़ी, जो मतलब जो हम बचा सकते थे, जो हम कर सकते थे, वो कहीं हाथ से बाहर तो नहीं चले गया। और मैंने जो मैंने अपने बुक में भी एक चैप्टर में एक लिखा है, एक सुरेश जी की कहानी शेयर करी है कि 6 महीने बाद मरीज वापस आ रहा है पूरी दुनिया घूम के। अरे अमेरिका से ओपिनियन ले लिया, टाटा से ओपिनियन ले लिया, एंड देन ही केम बैक एंड ही टोल्ड मी कि मैम आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही था, अब मैं पूरा मेरा मन समझ गया, अब मैं इलाज करना चाहता हूँ। तो मतलब and that happens and when this happens then unfortunately some of the times we have to say कि अब वो हालत नहीं है कि मैं इलाज कर पाऊँ। अब चीज जो कल कंट्रोल हो सकती थी आज वो बिल्कुल कंट्रोल के बाहर है। ये सबसे बड़ी बात है कि आई डू नॉट डिस्करेज सेकेंड ओपिनियंस, बट आई ऑलवेज से कि सेकेंड का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लंबी यात्रा पे मत निकल जाना, बिकॉज कैंसर सो नहीं रहा। आप ओपिनियंस ले रहे हैं पर कैंसर तो नहीं सो रहा। हमें उसका भी इलाज करना है, उस पे भी बांध लगाना जरूरी है। डेफिनेटली इसी को एक स्टेप बढ़ाऊं मीनू जी, मुझे लगता है कि हर स्पेशलिटी में और खासकर ऑन्कोलॉजी में मोस्ट इफ नॉट ऑलमोस्ट ऑल डॉक्टर्स वुड बी वेरी ओपन टू द आइडिया ऑफ फैमिली सेइंग कि डॉक्टर साहब हमें सेकंड ओपिनियन दिलवा दीजिए। सो फायदा ये होगा कि मान लीजिए मैं आपका मरीज हूं, मैं आपसे ही बात करता हूं, आपने मुझे किसी के पास सेकंड ओपिनियन भेज दिया, आपके और उस डॉक्टर के बीच बात हो गई। ये जो छुपा के, अगेन कल्चरल इश्यू है, डॉक्टर से छुपा के दूसरी तीसरी ओपिनियन लेने की जो चेष्टा है ना, वो और गड़बड़ कर जाती है। आई थिंक अ मच मोर सेंसिबल थिंग टू डू वुड बी इफ कंफर्टेबल, ask your own treating doctor, doctor, would you mind if I can get a second opinion? Most doctors today will easily arrange for it. Yeah, I totally agree. है ना सर? I totally agree. आज की डेट में हमारे कितने कोलीग्स हैं जो खुद जो ऑन्कोलॉजिस्ट होंगे, जो यूएस में होंगे, और बहुत सारे हमारे अपने पेशेंट्स होते हैं जिनके बच्चे ही डॉक्टर्स होते हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, and they really don't mind. They also talk to us and we talk to them, because at the end of the day सब कुछ किस लिए किया जा रहा है? सब कुछ उस एक मरीज के लिए किया जा रहा है। Yes, exactly. हमारा और उनका और सबका इंटरेस्ट है कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। So no doctor will mind a second opinion. Nobody. The only thing again comes is इतना लेट मत कर देना कि पकड़ना मुश्किल हो जाए, हाथ संभालना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैम मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सो आई विल एड्रेस टू ऑल द क्वेश्चंस ऑन मेल। मैं मेल आईडी अपनी दे दूंगी, मैम की भी दे दूंगी, सहेली की भी दे दूंगी। यू कैन शूट ऑल द क्वेश्चंस और आई विल गेट बैक टू ऑल द क्वेश्चंस। मैं देसाई सर को भी परेशान करूंगी कि मुझे सवालों के जवाब। मेरा जीमेल आपके पास है ही, आपके जी, और जी, तो मैं सर को भी परेशान करूंगी। एक लास्ट बात जो मैं आप दोनों से वाइंडिंग अप ऑफ दिस फर्स्ट सेशन में जानना चाहती हूँ, एज अ पर्सन अगर मुझे कैंसर डायग्नोस होता है तो मैं आपके केबिन से सिर्फ अपनी डायग्नोसिस लेकर ना निकलूं, बल्कि एक उम्मीद की किरण और एक पॉजिटिविटी लेकर निकलूं। ऐसा हम इन फ्यूचर क्या कर सकते हैं? As a doctor, as a psychiatrist, I would like to ask you, and as an oncologist, I would like to ask me. Find डॉक्टर मीनू वालिया। जैसे आपने अपना तजुर्बा बताया ना कि डॉक्टर साहब ने कहा, पूछा क्यों नहीं। Exactly. So, sir, because हम लोगों का जो टेक अवे होता है ना, वो डायग्नोसिस तो हो गया। अपार्ट फ्रॉम मैं आपको बताऊं, जोक्स अपार्ट, सीरियसली थोड़ा, एंड आई एम श्योर डॉक्टर साहब अपने तजुर्बे से, अपनी एक्सपर्टीज से बताएंगी, बट फ्रॉम साइकोलॉजी, साइकियाट्री, मेंटल हेल्थ, थिंकिंग व्यू पॉइंट, जिसको कॉग्निटिव साइंस कहते हैं, सी व्हाट हैपेंस, लेट्स फेस इट इज, एक हम सब मानेंगे कि दुनिया भर में इतिहास में था, अभी भी है, कैंसर का एक हवा है, जैसे मैंने पहले 2 वाक्य में कहा था। जहां हवा होता है वहां एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, कैटास्ट्रोफाइजिंग।
सिचुएशन को जो है राई को पहाड़ समझ लेना मानव सहज है। तो जो साइमा का सवाल है उसका सबसे पहला मुद्दा ये है कि अगर हो सके तो खुद दोस्तों की या परिवार की मदद से या ट्रीटिंग डॉक्टर की मदद से या काउंसलर साइकोलॉजिस्ट से अवॉइड करें उसको कैटास्ट्रोफाइज करना, क्योंकि मुश्किल सिचुएशन में मानव सहज है उसको राई को पहाड़ समझ लेना, और उसमें ट्रीटमेंट भी डिले होगा। एक और मुद्दा, साइको इम्यूनोलॉजी हम सब समझते हैं, ये 20-30 साल पहले, आई एम श्योर डॉक्टर साहब एग्री करेंगी, और लॉट ऑफ कैंसर लीजन्स आर आल्सो आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ योर साइकोलॉजिकल एंड इम्यून स्टेटस इज। सो ये जैसे अनुराधा सक्सेना जी लिख रही हैं कि कैंसर इज नॉट जस्ट अ वर्ड, अ डेथ सेंटेंस, हर कैंसर को डेथ सेंटेंस प्रिज्यूम न कर ले। राइट, ट्रू। अपने आप से विचार करें, दोस्तों से करें, काउंसलर से, अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से बेस्ट सलाह करें। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा, टाइप्स ऑफ लीजन्स, टाइप्स ऑफ ग्रेड्स, एक ही प्रकार के कार्सिनोमा में वेराइटीज हैं, साइंस नॉलेज बढ़ गया है, तो एक तो कैटास्ट्रोफाइजिंग ना करें। सेकंड, नेगेटिव थिंकिंग भी मानव सहज है, खासकर जब एक बार नेगेटिव मोड में हम शुरू हो जाते हैं। मैं इसको कहता हूं नेगेटिव स्पाइरल, है ना। तो सोच नेगेटिव दिशा में चली गई तो फिर सभी कुछ ब्लैक ही दिखता है, सभी कुछ डार्क दिखता है, उसको अवॉइड करें। देयर आर कॉग्निटिव एरर्स ऑफ दैट नेचर, सभी कुछ नेगेटिव दिखेगा वो नहीं करिए। सबसे अच्छी बात जो हम लोगों ने बार बार कही, आई थिंक सही वैज्ञानिक डॉक्टरी सलाह लें, जो डॉक्टर एक्सपीरियंस हो, जो टीम एक्सपीरियंस, उनसे बात करें, और जो सर्वाइवर्स हैं उनसे सलाह करें। राइट सर, राइट। मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगी सैमा, मुझे जी मैम। एक पर्सनल जो मेरे एक्सपीरियंस है, 30 साल से मैं कैंसर के मरीज देख रही हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बहुत स्ट्रांगली ये बिलीव करती हूँ कि कैंसर की लड़ाई ना बहुत हद तक यहाँ भी लड़ी जाती है। ये सिर्फ दवाइयों से, सिर्फ डॉक्टरों से, सिर्फ अस्पतालों से नहीं है, ये यहाँ भी लड़ी जाती है। तभी मैं विश्वास की बात करती हूँ। और दूसरी एक चीज है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं सभी को बोलती हूँ, और हम ना कई बार देखते हैं कुछ पेशेंट आते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ आएगी, मतलब एटलीस्ट 8-10 लोग आएंगे साथ में, और मतलब चाचा, ताया, मामा, बहुत सारे, है ना। और एवरी टाइम द पेशेंट कम्स एंड देयर इज अ खूब लंबी चौड़ी भीड़, है ना। एंड देन यू कैन, और मेरा वहीं पे मन बोलने लग जाता है, व्हिच आई हैव लाइक लर्नड ओवर माय एक्सपीरियंसेस, कि ये पेशेंट शायद इतना अच्छा नहीं करेगा, बिकॉज इतने सारे रिलेटिव्स, इतनी सारी बातें, और वो हर समय वो किसको फोन करके ये बीमारी होगी, वो बीमारी होगी, ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग माय पेशेंट। और कई आते हैं सिर्फ हस्बैंड वाइफ या क्लोज इंटीरियर, मतलब इंटरनल 2-3 people, and my best patients have been where it has been just 2-3, and they sometimes say कि हमारे पड़ोस में भी नहीं पता, हमारे किसी को नहीं पता। मैंने कहा बहुत अच्छा किया जो नहीं पता है, बिकॉज नोइंगली और अननोइंगली हमारी सोसाइटी बहुत सारा ना, जितना बोलते हैं तो वो फर्स्ट होता है, अच्छा कैंसर है, फिर देन दे से वो हमारे फलाना को कैंसर था, वो तो नहीं बचा, ये हो गया था। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड इज रजिस्टरिंग ऑल द नेगेटिव्स अराउंड, यस, है ना। yes, So yes. just 2-3 pillars that is important, and this is my own personal experience. People who will walk with limited attendance, 2-3 people who only they know in the family, those patients do very well. And people जिनका पूरा परिवार आता है, maybe it is helpful, but वो परिवार में इतनी सारी बातें वो आगे जाती हैं। So मतलब the way it comes back ना, वो मरीज नहीं भी बीमार तो वो पक्का बीमार हो जाता है। Allow me to put it this way, डॉक्टर साहब, allow me to put it this way, जो मैं आज लेट हुआ वो था एक वेबिनार डिसेबिलिटी पे, इंक्लूसिव एजुकेशन पे, और वहां यही बात कर रहे थे जो मैं जोड़ना चाहता हूँ कि अगेन डोंट गेट मी रॉन्ग, एनी वन ऑफ यू, भारतीय संस्कृति और साउथ एशियन कल्चर के बहुत एडवांटेजेस थे और अभी भी हैं, जिसमें से एक है जॉइंट फैमिली, जो डॉक्टर साहब डिस्क्राइब कर रही है ना। लेकिन आज के आधुनिक जीवन में खासकर हमें ये विवेक बुद्धि रखना होगी, वी हैव टू हैव द विजडम कि 25-50 जनों की जॉइंट फैमिली अगर अवेलेबल भी है तो मैं किस लेवल के व्यक्ति से कितनी मदद लूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री के भी हों। जैसे डॉक्टर साहब कह रही हैं बहुत सारे, अच्छा होगा क्या फैमिली को शायद दूर भी नहीं रख सकते,
But have it clear in your mind as well as have a polite conversation. I might just die. They Immediate help कितनी कितनों से चाहिए? वो विवेक बुद्धि बहुत जरूरी है। ये आप चला रहे हो क्या? क्या मैं चला रहा हूँ? Nice. Recording. He sent me book pics this morning. And that was the greatest news I've received. I love Can we receive stop this, please? Yeah, somebody else. Yeah. तो Yeah. स्पैमर होंगे जैसे मेहुल जी कह रहे हैं, पॉसिबल है। ओह हैकर, वाओ। तो देन आई रिपीट कि ये मैं मैम से एग्री करता हूँ कि लिमिटेड लेकिन स्ट्रॉन्ग इमोशनल फैमिली सपोर्ट हो, वो बेहतर होगा। लेकिन जॉइंट फैमिली भी हमारी यहाँ की एक सच्चाई है और बहुत सारे लोग अच्छे इरादे से मदद करना चाहेंगे। ये स्ट्रेटेजी भी बनना होगी कि मुझे कौन से ग्रुप से कितनी मदद लेनी है और कौन सी वाली। Shut the fuck up, you nasty bitch. I don't know how the fuck you jump on my son, you little nasty ass nigga. Shut your little bitch ass up, you dirty bitch. Who the fuck is this long head ass little jawbreaker looking ass nigga named Miss Mary? Shut your little bitch ass up, you ugly ass nigga. You dirty as shit, bitch. I don't get a point, nigga. I'm dirty ass, you greasy cheese fucking body with ass nigga. Sir, this link was sent on Twitter online. I'm from Zoom Technical Support. This link was sent online by someone called Charles Oliver. That's Charles Oliver, sir. Another thing, I'm sick of this fucking bottle shit. 2 moments later. Sir, maybe remove this. Saima, can I shut the fuck up? Sorry. Bitch, shut the fuck up. 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 Twitter, sir. Everyone can see it, Shut the so fuck that's up. why there are Bitch, shut the fuck up. on the call, sir. Bitch, shut the I'm fuck up. going from Zoom Technical Support. Bitch, shut the fuck up. Zoom Technical Support, sir. Bitch, shut This the link fuck was leaked. Bitch, shut the fuck up. Bitch, shut the fuck up. For the first time we are facing this problem. fucking. I will now show you fucking a beautiful village Ridiculous. So I guess these are the problems when you invite everybody and uncharted people also join. Yes, ma'am. This is I'm really sorry on behalf because I don't know this was something that was... No, you don't have to feel. Ma'am, you can actually remove the people who have joined unlawfully. I don't know how you can do it, but I think you can remove them. Yeah. So I think next time onwards we start doing registration and people who are registered only. हाँ, ये शायद सही है मैम, या बट देखिए एक कोई बात नहीं, खुले अप्रोच में ना, ओपन अप्रोच में, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स फाइन। Yeah, this is the new normal, sir. Webinar में this is the new normal and these are the new glitches जो हम रोज सीखते हैं और सीखकर भी learn to overcome them. अंकित का एक सवाल था, डॉक्टर साहब शायद बता पाए, खासकर ऑन्कोलॉजी के उसमें। I read in the chat, one Mr. Ankit had a question, which is legitimate जनता के हिसाब से. How to choose the best doctor? Sir, actually, sir, there's in the chat, someone is posting inappropriate comments in the chat, sir. I know. Let's disregard them. Let's disregard them. And it is better not to give importance to Let's just deal with what. So I think we can continue, Saima. Yes, ma'am. So I would immense gratitude to sir and ma'am for her views because अब मुझे लगता है कि फाइनली हमें पता लग गया है कि कैंसर की डायग्नोसिस के बाद हमें क्या करना है और क्या नहीं। ये आई एम वेरी श्योर अबाउट, ये मेरा टेक अवे था पर्सनली। अगर कल मुझे कैंसर डायग्नोसिस हो जाता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड आई विल नॉट बी पेट्रिफाइड या मैं परेशान नहीं होंगी। Please don't say I will be happy about it. Only say I will know how to positive about it. I will know how to tackle it. I will definitely know how to tackle it and I will know my roadmap जो आप लोगों ने मिलकर चार्ट किया है for every individual, for everybody कि क्या roadmap होना चाहिए जो हमें आगे चलना चाहिए. You know, hand holding that you have done, that will help so many. So immense gratitude to Dr. Desai and Dr. Meenu Walia, both of you. Can I move forward with your permission in the session? Yes, please. Yeah.
So, Madhvi and Niyati, are you two here? I would like आपकी वीडियो चली थी in the beginning, तो मैं आप लोगों से एक एक लाइन में भी जानना चाहती हूँ how you guys dealt with first 10 days of जब से आपको पता लगा कि आपको कैंसर है, the first 10 days, एक लाइन में maybe. Madhvi, are you there? Yeah, I am there. Am I Yeah, audible? Madhvi. Yeah, Madhvi, you are audible, very much audible. Yes, ma'am. मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अलग था. मेरी कैंसर डायग्नोसिस बहुत ही इट वाज माय हस्बैंड्स बर्थडे, सो इट वाज द वर्स्ट गिफ्ट. लेकिन मेरे साथ ये बहुत अच्छी चीज रही कि मुझे राइट टाइम पे हमने एक्शन लिया और हमने बहुत जल्दी उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि ये हो गया है. अब पीछे देखने से फायदा नहीं, क्यों हुआ ये बाद में सोचेंगे. अभी आगे क्या करना है इस पे हमने बहुत जल्दी हम स्विच कर गए इस पे. और इसके लिए मेरा जो एक सबसे मैं कह सकती हूँ जो मंत्रा रहा वो था निगेटिव थॉट्स. और जो मुझे बहुत सारे जो एडवाइसेस मिल रहे थे उनको मैंने कट ऑफ किया और जो मुझे लगा कि ये सही सोर्स है इंफॉर्मेशन पे उन पे मैंने बिलीव किया. और फिर अल्टीमेटली मैं मैम के पास आ गई और अभी आई एम सेफ. और मेरा यही है, अभी तक सेफ हूँ तो आगे भी निकल जाएंगे. बिल्कुल, आपकी मुस्कान बता रही है आप बहुत आगे तक निकलेंगे. एंड हमेशा ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराती रहिए, बिकॉज दिस मुस्कान यू नो स्प्रेड्स कहाँ कहाँ तक खुशियां फैलाती है. यू हैव नो आइडिया. थैंक यू माधवी, थैंक यू सो मच. नियति, आर यू देयर? Nitya Sanjay. Nitya, are you there? If she's not there, ma'am, then I'll just move forward because Madhvi ji की मुस्कान हम तक पहुंच गई है, हमारे दिल को छू चुकी है. तो I am moving forward. Let me move on to the next segment, कहानी योद्धा की. So मैं बिल्कुल गर्व से पूरा सीना चौड़ा करके I'm introducing my special invitee today. It gives me immense gratification to introduce our special invitee, a cancer survivor, Mr. Mehul Vyas. Our special invitee proves this quotation right, that you beat cancer by how you live, why you live, and in the manner you live. So he's a cancer survivor, a giver, a healer who lives in Ohio, United States of America. His story of victory over stage 4 throat cancer is immensely inspiring. But what's more heartwarming is his continued efforts towards cancer awareness and support. Sir's story is a strong testament of the power of the human mind over matter, जो जैसा अभी हम सबने सुना. So his journey reiterates that with efficient medical care coupled with one's own will to fight, winning over cancer is indeed possible. So sir, मैं आपकी कहानी खुद नहीं बताने वाली because I know आप कितनी beautifully उसे present कर सकते हैं. So over to you sir. हम सब इंतजार में हैं आपकी कहानी सुनने के लिए. Mehul sir. Okay. Thank you. Can you guys hear me? Am I Yes, visible? sir, perfectly. All right. Thank you. And first, thank you for inviting me on this beautiful platform. And I'm honored to be on the stage with Dr. Valia and Dr. Desai. Thank you so much. I am a stage 4 throat cancer survivor. I had 3 to 4 tubes in my body. And I am alive and I speak the truth and I'm not a ghost. So cancer, I've beat cancer. If I can, anyone can, okay? I'm going to, at the end of my talk, I'm going to show you some pictures of mine that will make you believe that I'm saying the truth. So I completely was listening to Dr. Valia and Dr. Desai and I agree to everything they said. Everything is so perfectly said that one who is starting this fight or is in the process should absorb all those things and follow it. I have done that myself. Okay, so I don't know how much time I have, but I'll just quickly try to tell my story in short. I was diagnosed with stage 4 cancer of my larynx, the vocal cord. I was a smoker, drinker. I did every bad things that a person can do. And I had a very bad style of living. Like I used to work night shifts and call center life, and I used to go boozing, partying, everything that at that time I thought was the best life. But finally then I
realized that very late and in a hard way. I call myself the luckiest person on earth because I am the luckiest person. I survived stage 4 cancer and I realized the purpose of my life. The cancer has changed me completely. The cancer has been a good friend of mine and I take every day in a very positive way and I live my life every day. So the first 10 days, let me talk about that because I guess this is the topic on the first 10 days. So I was not in denial because I was a smoker and I knew that cancer happens because of this. So I was not in denial. I knew कि कभी हो सकता है. But मुझे होगा पहले ऐसे नहीं लगा था. मुझे लगा मेरा दोस्त मुझसे ज्यादा सिगरेट पीता है तो शायद उसको होगा पहले, तब मैं छोड़ दूंगा. But ऐसे नहीं होता. So वो अभी भी सिगरेट पीता है और उसको कुछ नहीं हुआ है, but मैं एक vocal cord से बात कर रहा हूँ. So yeah, and then my wife Anaga, my pillar, my strength, my caregiver. She was in software. I was in Pune. We were in Pune and we were about to start a new life. She had got promoted to take care of her office in the US and we were winding up. I was working with Wipro in Pune. So she had been to the US before and I was going to plan to come down with my 7-year-old kid at that time in 2014. After school year I was going to get over. So life was like beautiful. Okay, abhi hum states jayenge and life will be changed and you know. So normally a young couple sochta hai. So that was it. But in the back of my mind, I knew something wrong was going in my body. My voice started changing, my weight started decreasing. I started feeling there is something miserably wrong. And I tell you from my experience, our body is our best doctor. आपके बॉडी को पहले पता चलता है कि कुछ गलत, कुछ तो गड़बड़ है. और जब आप चोरी करते हो तो आपको पता ही होता है कि आपने चोरी की है. तो I knew something was wrong. So when my in April 2014, I was staying alone. My kid was with my mother-in-law who stayed close by, and I was so afraid to sleep alone because I could not breathe. I could not swallow. I went to sleep with my mom, who was also staying close by, and then she heard me breathing in the night. And she took me to a hospital. Meanwhile, I kept going to my local जो अपने इंडिया में family doctor होते हैं ना, उनके पास I kept going. He kept giving antibiotics, kept changing them, but that didn't help. My mother, she heard me breathing and she took me to Aditya Hospital in Pimpri. They did a scope and they found a tumor on my vocal cord. It was so big that I could not breathe and it was blocking the way the air would go in, and it was blocking my throat. So immediately the doctor there, they put a tracheostomy tube in my throat so that I could breathe properly, and they started their process. And they did a biopsy and they figured out that it was stage 4 cancer. It had spread almost to my spine. So, and that's where my life changed. So I was not in denial, but I was in a shock. कि मुझे अभी cancer हो गया. And again, as doctors have told here that we started Googling and all. And I was in a shock and I was scared of dying. That happens when and I didn't know what cancer was actually till I got it. So again, I started Googling, I started looking what happened. And I'm alone, my wife is in the US. She is more scared than me. She was packing her bags to come back. And my life suddenly took a 360-degree turn. मतलब आज मैं सोच रहा हूँ कि I'm going to live a new life and again now, next day I'm going to die. So सब change हो गया life में, and it was welcomed cancer. मैंने उसको बुलाया था because of all those bad things I did. But then I cried for 4 or 5 days a lot. I cursed myself. I blamed myself. I felt guilty, frustration, anger. कि ये मैंने क्यों नहीं किया? मैंने क्यों मेरी wife की और मेरे parents की बात नहीं सुनी? क्यों? I kept doing it. और बहुत guilty, and because of me, I spoiled everyone's life, and all those things kept coming in me. But then finally, I thought कि अभी life has no reverse here. जो हुआ सो हुआ. Now I have to fight it out, whatever. अगर कुछ भी chance है, even 1% chance, I'm going to take that chance. I'm going to fight it. Meanwhile, my wife, she was in the States and she did some research, and luckily I had my documents ready and I was able to travel to the States, and I started my treatment in James Cancer Hospital in the US. Let me tell you again, friends, the treatment here and in India is the same. My oncologists were Indian. जो गलतफहमी होती है लोगों को US में जाके
ठीक होता है आदमी, ऐसे कुछ नहीं है. We have got the best hospitals in India. My doctors were Indians in the US. Dr. Neki, Dr. Bhatt, ये सब every year they come to Tata Memorial for conferences and all. So वो एक myth है कि इंडिया में ट्रीटमेंट अच्छी नहीं. It's not like that. यहाँ भी 3 महीने यूएस में वेटिंग था, वहां भी वेटिंग होता है, बीमारी ऐसी है. So that was all changed. Again, the doctors just scanned me here and then they said we cannot remove the tumor because it's all spread. And you just have a chance of, very less chance, maybe a month you might survive, but you can start aggressive chemo. So they started an aggressive chemotherapy on me. And then 1 month became 2 months, 3 months, and then gradually I survived. I did not give up because I made those emotions that I had gone through my weapons. अब मैंने गलती की है ना, तो मैं मेरे बच्चे को 7 साल के बच्चे को अकेला बिगर बाप का नहीं छोड़ के जाऊंगा. I will dance in his marriage. I will do that. I cannot. My wife used to tell me every time I smoked a cigarette, I'll leave you and go if something happens to you. But she didn't leave me. So that guilt and that made me feel, I cannot die like that. I have to live for them, not for myself. So always make use of your emotions as your power machine that charges you. And that has really helped me. And again, the brain, the mind is that works more better than the medicines. Because there is scientific reasons. I don't know. I'm not a scientist. I'm not a doctor. But I tell you, it really helps. And keep those negative people away. जो डॉक्टर देसाई ने बताया कि ये वैद्य के पास जाओ, लोग इतना ज्ञान देते हैं. आज भी आई एम मेनी सपोर्ट ग्रुप्स एंड पीपल स्टार्ट, आई आस्क देम व्हाट इज कैंसर. उनको कैंसर क्या ये पता नहीं और इलाज पता नहीं चले. So that is what it is. If anyone is giving you any ज्ञान, ask them, give me proof, give me evidence. I will decide my next step on evidence. अगर आपके पास evidence है तो बताओ. I have a brain to think. मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सोचूंगा और फिर मैं करूंगा. Every cancer patient or every person fighting cancer should always question your doctors. It is your right. आपका right है वो to question your doctor. Doctor मुझे बताओ why this and why not that. And I'm sure a good doctor will not hesitate to answer your questions. You have to ask questions till you are satisfied. It is your body. Again, as doctor said that no two cancers are same. कोई भी दो cancer same नहीं होते. If like it is a simple example. अगर हम होटल में जाते हैं खाना खाने फैमिली, तो एक हम सब्जी मंगाते हैं, तो इस मिस्टर ए को तीखा लगेगा, मिस्टर बी को तीखा नहीं लगेगा, बट सब्जी तो वही है. The problem is the body is different, right? So same thing is with cancer. अगर one medicine work for me, it might not work for you because my body is different, your body is different. Only the doctor can tell what will work with what because they have studied that disease. And again, I don't say that Ayurveda and other treatments alternative are not good, but they are not meant for cancer cure. Like aeroplane space में नहीं सकता, space में सिर्फ rocket ही जा सकता है. Same thing, like Ayurvedic may help with your side effects, but I don't think it has a cure for cancer. So again, like Dr. Desai said, if you want to take second opinions, do let your doctors know. Don't keep hiding things from each other. And one more point I would like to say that, I was very open. मैं तो जैसे मैं मुझे कैंसर हुआ समझा, I told my friends, I told my neighbors, my relatives, and the good part is that I got a lot of support. I got a lot of strength from people. There were not many support groups in 2014, but there are now. So you get to know many things, and you also get to know who are your true friends and who are not your true friends. So जिनको बात नहीं करनी थी वो चले गए, and I'm happy without them now. So yeah, there are many plus and minus points. But again, finally coming to my story, I was 7 months in my treatment for chemo. They scanned me again. They still did find some traces of cancer, and they I had a session of radiation and chemo together. So finally, I survived. I was not supposed to talk. I was not supposed to stay alive. But finally, God is great. Trust your doctor after God, and it really works. I have a very, very positive mindset.
ऐसा नहीं है कि कहानी वहां खत्म हो गई, उसके बाद भी आई एम स्टिल लिविंग विद मेनी प्रॉब्लम्स. आई हैड माय टीथ fall out. All teeth are duplicate. I have 12 implants, 6 up and 6 down. I have swallowing problems, इसलिए मुझे डायलेशन करना पड़ता है. मुझे जीने के लिए बहुत तकलीफें उठानी पड़ती है, बट आई एम हैप्पी कि मैं जी रहा हूँ और मैं I am trying to give back to people. I am trying to give back to society. I am not scared of cancer. Cancer is just a disease like any other. It is not a death sentence. हम कैंसर को भी डिजीज बोलते हैं, और डिजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक बीमारी है, वो खाली उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी अलग है. सो कैंसर से घबराना नहीं चाहिए. बेसिक लाइफ इज नो रिवर्स गियर. अगर कैंसर हुआ तो आपको वापस यू कैन नॉट गो बैक एंड से नो आई विल स्टार्ट लिविंग डिफरेंटली. हुआ है तो फेस इट. एंड then I had noted some tips. Let me see if I can see. Yeah, and leave your ego. Ego जो होता है ना, मुझे ego था, so I'm telling about it. कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं ऐसा हूँ ऐसा. Leave it. जो है वो है, accept करो. Ask questions and then be open to yourself. अपने आप से तो झूठ मत बोलो. मतलब है ना, जो problems है, talk to your doctor and talk to people you trust. ट्रस्ट नाम की चीज होती है जो आपको यूज करनी चाहिए ऐसे टाइम पे. कि अगर आपका इंट्यूशन होता है कि मुझे ये, इवन इफ इट इज एन अननोन पर्सन, मुझे वहां पे हॉस्पिटल बेड पे एक अननोन लेडी आके ब्लैंकेट डाल के जाती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि मुझे इस पे ट्रस्ट करना चाहिए, बिकॉज शी नोज कि मुझे ठंडी लग रही है. आई कैन नॉट टॉक बिकॉज ट्यूब में गले में ट्यूब थी, बट जस्ट दैट ट्रस्ट थिंग. आई जस्ट लुक्ड एट हर. उसके मेरी आंखों से समझ में आया कि मुझे ठंडी लग रही है. शी बॉट अ ब्लैंकेट एंड शी पुट इट ऑन मी. सो वो एक पावर ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ थॉट्स रियली काम करता है. if you have a minute, I would like to show my 1 minute clip if that's okay. Yes, Mr. Mehul, I have given you screen sharing rights. You can share your screen. Okay, let me see. मेहुल जी, आप ये भी बताइए कि आप पानी पूरी भी नहीं छोड़ते थे. हाँ, मैं तो गुजराती हूँ. मेरे को मालूम, आपने बताया था कि आपको खाना मना था, लेकिन आप वो भी नहीं छोड़ते थे, खाया नहीं जाता था. नहीं खाया जाता था, लेकिन मैं उसका पानी पूरी का रगड़ा बना के खा लेता था. खा जाते थे कुछ ना कुछ करके. तो I'm really your admirer. This is the great Thank you so much. Clapping. Thank you. Okay, I'll just share my screen a minute. I made a short video about my story, my wife and my kid. This was when the year I was diagnosed, 2014. And this was when I was on my way to office, and I went to Aditya Birla and they scoped me. They saw a tumor, or immediately, ये सुबह का फोटो है और ये दोपहर का फोटो है. I was under my treatment. And this is when I had a tube in my throat and I could not talk. So my wife got me a notepad, and I was writing and communicating. That was fun also. बोलते बंद. मेहुल भाई. Sir. Not able to see your. Okay. Yeah, this is when there was I had a tube in my nose and I used to feed myself. There's a tracheostomy tube on my throat. And this is all about the chemotherapy. I had the PICC line and all inserted. This is during my treatment. So this is me. Very harsh treatment, but yeah. So I told you I'm not a ghost. This is the same me. If I can, anyone can. आज मुझे देख के कोई बोलेगा नहीं कि I'm speaking with one vocal cord. But yeah, this was my daily routine. I could not open my jaw, so this was the jaw exercise that I was given. This was me with a bald head. very, I look very smart. This was me during my radiation. I had, it was very harsh, but yeah, I had to fight it out. I made up my mind. Kuch bhi ho jaye. I'm not going to give up. I'll do everything I can. These are some side effects that were daily,
swollen mouth and things coming out of the tracheostomy tube and all. Sleepless nights. Finally, I made it. I was given a Courage Award because very less people usually come to this point. I was able to make it luckily. Me and my wife at the end of treatment, they gave me a certificate, Courage Award. And this is when I started healing up. That's the day when the doctor took the tracheostomy tube out of my throat, and I was really happy. And these are my parents. My dad is no more with me, but you know, he had to suffer a lot. He had to sell his property, his savings, everything gone for my bad habits. Yeah, so my long story short, I just try to make it short and show those pictures to the people who are here, and don't get into negative feelings. It's not impossible. It's not impossible at all. If I can, anyone can fight it out. So feel free to reach out to me anytime you think I can be of any help. I show this to school students. I go to schools and colleges and show them my pictures, my life before cancer, after cancer, and tell them don't smoke, don't do all these bad things. Everyone is not lucky to survive. And yeah, I know it's a long time, so I'll just stop here. Thank you again for listening to me, everybody. Thank you. Mehul sir, I have always been in awe after listening to your story, and it continues the same. It has never, मुझे कभी भी वो हमेशा उतनी ही गहराई से छुई है आपकी बात जितनी आपने मुझसे हमेशा करी है. तो it is just so inspiring, and to have the courage to go back to those memories and actually make those memories beautiful. आपने उन memories को इतना खूबसूरत बना दिया है कि आप बार-बार उन तक जाना चाहते हैं और बार-बार उन तक जाकर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि if I can, so can you. Hats off to you, sir. I am really, I don't, निशब्द जिसे कहते हैं इस वक्त मैं वो हूँ. I am speechless, but I am so grateful to you कि आप वो कर रहे हैं जो इस वक्त हर एक सर्वाइवर को करने की जरूरत है, जिसके बारे में पूरा सेशन था. To actually raise awareness, to actually neutralize the stigma of cancer, to tell people cancer कोई हवा नहीं है. अगर आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं. और आज आपकी बात ने हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, जहां तक जुड़े हुए हैं, पता नहीं कितने लोगों को इंस्पायर किया होगा और कितने लोगों को बताया होगा कि कैंसर सिर्फ एक बीमारी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. Immense gratitude, sir. So on behalf of entire team of Asha, on behalf of Dr. Meenu Walia, a small token of felicitation हमारी तरफ से आपके लिए. Thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी आशावादी बातें हमारे तक पहुंचाने के लिए और हमारे जरिए बाकी सब लोगों तक पहुंचाने के लिए. I am sure it will make a difference. Thank you, sir. Thank you. I'm so honored. Thank you so much. I'll always love to be here. Anytime anyone needs any help or if there's someone going through some similar journey like me, I can talk to them myself. Dr. Desai, Dr. Meenu, let me know if there is any way I can. Wonderful, Mehul bhai, great. I can always be there anytime. 24 hours I'm available. बहुत सरस. इससे अच्छा और क्या हो सकता है, sir, that you're there for everybody. So thank you so much from Asha. Thank you, Mehul sir. Thank you for accepting the invite and actually coming up and talking about it. जी देसाई सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बहुत जैसे लोगों ने चैट में लिखा है, मेहुल व्यास की स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है. द बॉटम लाइन इज कि नेगेटिविटी को जीरो करें या बहुत लो रखें, पॉजिटिविटी रखें हर पहलू पे. बिल्कुल, डेफिनेटली. आंधियों में दियों को जलाना है, आशाओं के नए गीतों को गुनगुनाना है. मैं हमेशा ये बोलती हूँ. Good, Saima, very nice. जी सर. So thank you so much for having me here. Yeah. Same here, sir. It was an honor for all of us to have such a nice, happy-looking doctor who is actually इतनी खुशी मुस्कुराते हुए उन्होंने इतनी गहरी बातें कह दी कि हमें पता ही नहीं लगा कि कितनी important बातें आपने बोल दी. But impact उतना ही था, लेकिन मुस्कुराहट के साथ था, तो वो और ज्यादा absorb कर पाया हमारा दिमाग और दिल. So thank you, sir. Thank you to all of you. Very nice. Bye. Okay, sir. So I would like to invite
ग्रामीण स्नेह फाउंडेशन की तरफ से मिस नेहा टू एड्रेस दिस गैदरिंग और जस्ट टू रैप इट अप एंड से द फाइनल वर्ड्स. मैम, आर यू देयर? Hello. Yes, ma'am. Hello, everyone. This episode is really very inspiring and very informative. I would like to thank everyone who joins this series. आज जैसे हम लोग पहले भी बात किए थे कि हर महीने एक सीरीज करेंगे so that people will get aware. और कैंसर जैसे बीमारी को तभी हरा सकते हैं जब हम बहुत ज्यादा सशक्त हो. इन द सेंस सशक्त मीन्स हेल्थ एजुकेशन में इतना सशक्त हो जाए कि पहले ही बीमारी पता चल जाए और बीमारी ना हो उसके लिए क्या किया जाए और हो तो इसको कैसे कोप अप किया जाए. तो दिस सीरीज इज वेरी बेनिफिटेड टू एवरीवन हु जॉइन दिस एपिसोड एंड डेफिनेटली आई वुड लाइक टू थैंक्स डॉक्टर मीनू मैम जो कि उनकी एफर्ट्स से ये सब हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम हर जॉब वो और भी कुछ कर रहे हैं जो कैंसर पीड़ित पेशेंट्स हैं और सर्वाइवर है. थैंक यू डॉक्टर देसाई, यू आर सो good to say that inspiring word and information, and the rest I can say thanks. And this episode हम आगे भी जारी रखेंगे ताकि लोगों को मदद नेक्स्ट मिले. एपिसोड बिल्कुल तैयार है पेश होने के लिए आप सबके साथ. हमारा पूरा स्नेहा मैम, थैंक यू फॉर योर लवली क्लोजिंग रिमार्क्स. सो बहुत अच्छे जी सर, हम डटकर खड़े हैं, हटेंगे नहीं. तो यहाँ हम ये मोर्चा छोड़ने वालों में से नहीं है. एक बार पकड़ लिया तो अब इसको अंत तक ले जाएंगे. बिल्कुल नहीं, हमारा हौसला एकदम बुलंद है, आशाएं मजबूत है. कैंसर से लड़ेंगे और जीतेंगे भी और लोगों को भी जागरूक इतना कर देंगे ताकि कैंसर को जैसे सोचे कि एक आम बीमारी है सर्दी खांसी की तरह. Definitely. With these inspiring words of Sneha ma'am, मैं आगे बढ़ती हूँ और इंट्रोड्यूस करती हूँ अपने नेक्स्ट एपिसोड ऑफ कैंसर ऑफ आशाएं, which is feelings and cancer. तो हम बीमार की बात करते हैं, बीमारी की बात करते हैं, जो कहीं गुम हो जाती है वो है हमारे जज्बात. So our next episode will be completely dedicated to cancer and feelings. वो हर बात, हर एहसास जिसके बारे में आप बात नहीं कर पाए, जो अनसुना रह गया. तो इन द नेक्स्ट सेशन हम बात करेंगे इसी कश्मकश से जुड़े सवालों की जो हमारी जिंदगी को घेर लेते हैं जैसे ही कैंसर हमारी जिंदगी से जुड़ जाता है. इन सभी एहसासों के बारे में, बातों के बारे में हम साथ मिलकर गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे. आशा है कि अगले एपिसोड में हमारे साथ जरूर जुड़िए. हमें आपका हमेशा की तरह इंतजार रहेगा. 4 लाइनों के साथ मैं अंत करूंगी जैसे मैं हमेशा करती हूँ, विद 4 लाइन्स ऑफ मोटिवेशन. वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है. जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, जब राह की कीलें पग छलनी कर देती हैं, ऐसे में भी गगन भेदी हुंकार लगाना पड़ता है. भाग्य को भी अपनी मुट्ठी में अधिकार से लाना पड़ता है. वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है. So with these lines of motivations for all of you, with this we at Ashai will meet you soon with new zeal, zest and promises and a tank full of willpower. Till then, stay healthy, stay hopeful, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, उम्मीदों के दिए जलाते रहिए. Thank you so much all of you. It was a pleasure to be with everybody. Heartfelt gratitude to each one of you. Thank you. Thank you. Thank you so much everyone for joining, and my sincere apologies for the glitch that we had in between. Really sorry for that, but I hope you all had a great session today. It is just Sahini, we are getting famous. तो जब हम famous होते हैं तो ये चीजें होती हैं. It is okay. It is just in the way of becoming famous. So it is all right. We'll overcome these two. Let the spammers come. झेल लेंगे उन्हें भी. Every session is a new learning for us. इस session से ये learning हमारे लिए रही. So next session we will be more prepared. Yeah, it's okay. चलो, okay. Thank you everybody. Okay, Sahili. Bye bye.